So basically, there are 12 cranial nerves. In the 12 cranial nerves, we talked about olfactory nerves, which is for smell, and second is optic nerve, which is for sight. Third, fourth, and sixth cranial nerve for eye movement, and third for constriction of pupil, okay, and dilation. Okay, so this is we talked about in previous classes. And we talked about trigeminal nerve. Trigeminal nerve for face, scalp, and teeth contraction of chewing muscles. Okay, so whenever a patient came into your clinic, if he's telling I have weakness in my face, so understood you have to assume that there is any problem in the trigeminal nerve or facial nerve. Okay, so neurologically you have to observe the patient. Okay, facial nerve. So we completed seven cranial nerves. Today we'll complete all the remaining cranial nerves. Eighth number cranial nerve is acoustic or vestibulocochlear, vestibulocochlear nerve or acoustic nerve. What is its use? It is for hearing, hearing and sense of equilibrium. Okay, sense of hearing and sense of equilibrium. Okay, acoustic nerve for hearing and equilibrium. So let's see the pathway of acoustic और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. सो हम लोग यहाँ पे एट्थ क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एकॉस्टिक नर्व और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है आपको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. सो दिस इज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. यहाँ से निकलता है, देखिए ये आपका सेरिबेलम है. ठीक है, सेरिबेलम, दिस इज द पॉन्स, सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, एंड दिस इज द एरिया. सो यहाँ से निकलता है, देखिए वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. सो दिस इज द पाथवे. यहाँ से देखिए ये नर्व ऐसा आता है, यहाँ से कनेक्शन है पॉन से पीछे के एरिया से. इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनल ईयर. Okay, so we will talk about detail in ENT, but here you have to understood about cranial nerve number 8, that is vestibulocochlear nerve. तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, जो नर्व नंबर 8 है. यहाँ से यानी ब्रेन का ये पिछला हिस्सा है, यहाँ से ये नर्व निकलता है और निकल के आपको यहाँ से ईयर की तरफ ये पूरा क्या है आपको कनेक्शन होता है. ठीक है, सो देन ओनली यू आर एबल टू हियर. सो व्हाट हैपन इफ एनी mechanical injury happen to your brain, backside of the brain, what will happen? The nerve will damage and you are unable to listen properly. And the second thing happen that the person equilibrium will disbalance. Means you, if you suddenly someone is calling you, you are turning your head and seeing. Means you are not falling down. First thing. And second thing, you are walking, when you are erasing the right leg, you are putting left leg, so you are not falling. So means this is how the cerebellum will work while doing this work. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को बताने का ये है कि ये जो नर्व है, नर्व आपको हियरिंग में मदद करता है और बैलेंसिंग में भी मदद करता है. बैलेंसिंग, जैसा कि आप चलते चलते आप सडनली पलट के देखते हैं आपको पुकारने के बाद, तो आप आपकी बॉडी बैलेंसिंग भी रहती है और पीछे आप मुड़ के भी देखते हैं, गिरते नहीं आप. तो इसी तरह एक पैर उठाकर दूसरा पैर रखते हैं आप, जब भी नहीं गिरते. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपके ब्रेन के नर्व की वजह से.
ये नर्व आपको मेंटेन करा रहा है। जैसा जैसा आपका टर्न हो रहा है, वैसा वैसा ब्रेन से सिग्नलिंग जा रहे हैं कि भाई आपको टर्न करना है और बॉडी को भी मेंटेन करना है, आप दोनों चीजें एक साथ करना। ठीक है। तो ये था आपका वेस्टिबुलर कॉक्युलर नर्व नंबर 8। नेक्स्ट वी हैव ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सो हम लोग नर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे जो दिमाग से निकलते हैं। ठीक है। निकल के अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है। तो दिमाग से निकलने वाले कितने रगे हैं, कितने नर्व्स हैं? 12 है। तो 12 में से हम लोगों ने 8 को कंप्लीट कर लिया। तो हर एक रग का अलग अलग फंक्शन, अलग अलग उसका पैथवे, यानी उसका जाने का रास्ता है, कहाँ से वो निकल रहा है, दिमाग के किस हिस्से से निकल रहा है। ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट वी हैव ग्लासोफैरिंजियल नर्व। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लासोफैरिंजियल नर्व? ओके। ग्लासोफैरिंजियल नर्व। ग्लासोफैरिंजियल नर्व फॉर टेस्ट, यानी आप जो टेस्ट करते हैं आपके टंग के ऊपर, वो है। सेंसरी फॉर कार्डिया, कार्डियक सेंसेशन के लिए, और रेस्पिरेटरी सेंसेशन के लिए, ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्सेस के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग्स, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। सो यहाँ पे ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व जो है उसका फंक्शन क्या है? आपको टेस्ट महसूस होना, यानी आप जो खा रहे हैं, ये कड़वा है, मीठा है, या साल्टी है, या फिक्का है, ये टेस्ट कैसा मालूम हो रहा है आपको? ये नर्व्स। एंड सेकेंड इज, ऐसा देखिए एक चीज है, अब यहाँ पे इससे पहले भी आपको बताया गया है कि कुछ नर्व जैसे ट्राइजेमिनल नर्व एंड फेशियल नर्व, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द टेस्ट और टंग। सो बेसिकली अलग अलग टंग के अलग अलग एरिया को अलग अलग नर्व सप्लाई हो सकती है। तो डिटेल में जब हम ईएनटी का लेक्चर पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि कौन सा नर्व कहाँ से जाके टंग के कौन से हिस्से में नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सेंसरी फॉर कार्डियाक। कार्डियाक के जो भी आपको पल्स रेट है या हार्ट रेट है, ठीक है, ये हार्ट रेट को मेंटेन करना, वैल्व्स को ओपन करने के लिए मदद करना। जब हम कार्डिया का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हमें समझ में आएगी बात। तो इतना याद रखिए कि कहीं ना कहीं हार्ट के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए हेल्पफुल है। और ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्सेस, यानी जब कब ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाए, कब बीपी को कम कराया जाए, घटाया जाए, तो ये कंडीशन आपको कहाँ से होगी? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, नर्व नंबर 9। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ pharynx, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ pharynx। ओके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ pharynx मीन यहाँ पे जो आपके खाने की नाली है, फूड पाइप है, उसके ऊपर जो pharynx होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना, ये भी चीज हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, जो आपको थूक निकल रही उसके बारे में जो आपको बताता है, वो ग्लासोफेरेंजियल। इट इज द फंक्शन, इट विल एडवाइज टू डू द फंक्शन। ओके। तो बेसिकली ग्लॉसोफेरेंजियल वर्क फॉर टेस्ट, center for cardiac, center for respiratory, the center for blood pressure, contraction of pharynx, and secretion of saliva. So let's see the glossopharyngeal nerve. You can see that this is the. So you can see that this is the uh, where is
Glossopharyngeal nerve. This is the glossopharyngeal. This is the glossopharyngeal nerve. So we have the branches. This is the branches. You can see that. Okay. This is the branches for taste. From that area, it will reach to the heart, respiratory center, and blood pressure reflexes. Okay. So this is the nerve you have to understand. Next, we have vagus nerve. Very, very important and largest nerve in the cranial nerves. So ये वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 12 क्रेनियल नर्व्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट है पूरे बॉडी में तकरीबन। यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना आपका हजम होता है, वो जो उसको वो सिस्टम है, वो सिस्टम में ये पूरी रग फैली हुई है। तो सो वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व एंड it is sent to the all digestive systems. Okay, digestive system area. Okay, so this is the largest nerve, vagus nerve, and important nerve. Sensory in cardiac. So it has sense of cardiac, respiratory, and blood pressure. And speaking, motor function means speaking, मीन्स यहाँ से जो वेगस नर्व आएंगे आपको स्पीक करने के लिए, बात करने के लिए मददगार साबित होगी. Then you have, it will decrease the heart rate. So whenever, yeah, it is necessary to decrease the heart rate, okay, while sleeping, while you are taking rest, okay, in some conditions, our body need decrease heart rate. यानी जो दिल धड़कता है उसका रेट को क्या करना है, कम करना है. इसका भी जब जरूरत पड़ती है ये वेगस नर्व करते हैं. Contraction of alimentary tube, peristalsis means whenever you eat food, the peristalsis movement will occur. Means the food enter into digestive system, then it will absorb in, mix in the stomach, and it will absorb in small intestine and come outside with the help of large intestine. Okay, whatever unnecessary things. So vagus nerve is important for digestive system and increase digestive secretions. So whenever you eat food, what will vagus nerve do? It will increase the digestive secretions. तो वेगस नर्व किस किस के लिए हेल्प करता है देख सकते हैं आप. कार्डियक, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर, और बात करने के लिए भी मददगार साबित होता है, और हार्ट रेट को कम करता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री ट्यूब, यानी जब आप खाना खाते हैं तो होना चाहिए कि एलिमेंट खाना आपको जैसा निगल, जिसको कहते हैं हम चबा के निगलना. ठीक है, ये निगलने की जो प्रक्रिया है वो वेगस नर्व से होता है. ठीक है. और खाने के लिए जो हजम करने के लिए जो तत्वों की जरूरत है वो रिलीज वेगस नर्व कराता है. ओके, so this is the importance of vagus nerve. Let's see the vagus nerve. So vagus nerve is connected to the most parts of the body. Okay, you can see this. This is the, so you are able to see that this is the vagus nerve. Here we have the vagus nerve. Here we have the vagus nerve. 10th nerve. This is the branches. One is enter into the heart. One is connected to the lungs, and another is connected to the all parts of the digestive system. Digestive system. Okay. So this is the digestive system. So most of the nerves, basically, what will happen during pregnancy? So the nerve is compressed. Vagus nerve is compressed. So whenever, or whenever you are traveling sickness, some patients have traveling sickness. Means आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको उल्टी आने लगती है. तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ब्रेन में जब प्रेशर बढ़ता है तो वेगस नर्व कंप्रेस होके आपको क्या कराता है, पेट में आपको
मतली होती है, जी मतलाता है, तो फिर आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। एक है और ऐसे पेशेंट, देखिए दो तीन चीजें और भी याद रखने की है कि वेगस नर्व अगर डैमेज होगा तो आपको भूख लगने में दिक्कत होगी, पहली चीज, और वॉमिटिंग्स होंगे, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, और मोशन पास करने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है आपको वेगस नर्व्स के जरिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। सो नेक्स्ट nerve is accessory nerve. Accessory nerve is contraction of neck, shoulder muscles, motor to larynx, and also helpful for speaking. So accessory nerve या एक्स्ट्रा cranial nerve है, accessory helpful है। ये आपके शोल्डर के लिए, नेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन, इसके रिलैक्शन, मूवमेंट के लिए। ठीक है, और शोल्डर के लिए भी, शोल्डर के पास जो मसल्स है, अब हम देखेंगे, वो मसल्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और इसी तरह बात करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो accessory nerve is helpful for contraction of neck, shoulder muscles, and speaking. Okay, let's see the accessory nerve. So you can see in this image that accessory nerve is coming. It is attaining the shoulders, and it is uh, have the branches which is situated around the neck muscles. ओके, ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और अच्छे इमेज में ये देख सकते हैं आप। तो मसल्स जो भी नेक्स में है, यहाँ से निकल रही है, देखिए एक्सेसरी नर्व निकल के शोल्डर, ट्रेपेजियस मसल, can see that this is the trapezius muscle, it is supplying accessory muscle. And here we have the roots of C1, cranial roots, accessory branches of accessory nerves. So it is have the branches throughout the shoulder and the neck. Okay, सो ये हम देख सकते हैं एक्सेसरी नर्व हमारे गर्दन में कैसा फैला हुआ है। ठीक है, ताकि मूवमेंट कर सके हम लोग, जो मूवमेंट कर रहे हैं ये मजल से ही कर रहे हैं मूवमेंट, लेकिन मजल्स को जो फंक्शन करने के लिए जो प्रोत्साहित करेगा वो कौन होगा, आपके नर्व्स। नर्व्स से ही इंफॉर्मेशन आएगा तो ही मजल्स मूवमेंट करेंगे आप। ठीक है, तो इन समटाइम्स यू हैव नेक स्टिफनेस। कभी कभी क्या होता है, आप सो जाते हैं एक ही साइड, तो आपका जो नेक है वो एकदम पकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो एक्सेसरी नर्व है वो मूवमेंट नहीं करने की वजह से, और वहाँ पे सही इम्पल्स जनरेट नहीं करने की वजह से वो रग क्या हो जाती है, अकड़ जाती है, मसल्स क्या हो यहाँ के स्टिफ हो जाते हैं, तो आप गर्दन हिला नहीं पाते। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो दो तीन मरतबा हुआ अब तक। ठीक है, so why this is happening? Because of accessory nerve. So what we have to do? We have to relax the accessory nerve, then it will work very good. So you have to relax your neck. Okay, you have not to take high pillow, you have to take soft pillow. Okay, cotton pillows, so then it is very okay for you. Okay, if you take hard pillow, what will happen? If you are sleeping on the hard pillow, your neck is on the pillow, what will happen? The hardness of the pillow and the weight of your head will compress the nerve. What will happen? It compress the nerve. So what will happen? The circulatory system which have to supply the blood to the nerves, or the nerves which send the impulse to the muscles, will block. Okay, then the circulation of the impulse or the blood will not reach to the nerve or the muscles. Then what will happen? The function of the muscle and the nerve will stop.
then you will see the stiffness of the neck and the muscle. So basically हार्ड पिल्लो अवॉइड करिए ऐसे चीजें होने के लिए. नेक्स्ट वी हैव हाइपोग्लोसल नर्व. हाइपोग्लोसल नर्व, मूवमेंट ऑफ द टंग. सो हाइपोग्लोसल नर्व आपकी जबान, ये जबान है, टंग, ये टंग को मूव करने के लिए. अब मैं बात कर रहा हूँ तो जबान में इधर भी आ रही, इधर भी आ रही, ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं. तो कैसा हो रहा है? ये आपके हाइपोग्लोसल नर्व से हो रहा है. हाइपोग्लोसल नर्व अगर डैमेज हो जाएगा तो टंग मूवमेंट नहीं होगी, टंग मूवमेंट नहीं होगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे. ओके. सो बेसिकली आपने सुना होगा कोई बच्चे हियरिंग लॉस से पैदा होते हैं. You hear that some children have birth with the loss of hearing और लॉस ऑफ टॉक, दे आर अनेबल टू टॉक. गूंगे बहरे पैदा होते हैं, कोई अंधे पैदा होते हैं. तो क्यों होता है? क्योंकि उनकी ये नर्व्स डैमेज हो जाती है. ऑप्टिक नर्व इज परमानेंटली डैमेज, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर और ऑप्टिक नर्व इज परमानेंटली डैमेज, हाइपोग्लोसल नर्व इज परमानेंटली डैमेज. और हियर वी हैव द स्पीकिंग, स्पीकिंग एरिया. Speaking area means what will happen, or vestibulocochlear nerve is permanently damaged. Okay, this is happening the uh, children. So, okay, let's see the hypoglossal nerve. Then we complete all the nerves. You can see that this is the hypoglossal nerve which is coming and it is attached to the tongue muscles. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नर्व यहाँ से निकला, यहाँ ब्रांचेस तो है इसको, लेकिन मेन फंक्शन जो है इसको आपका जो है टंग है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू ड्रॉ दिस इमेज एवरीवन. प्लीज डू द होमवर्क इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग. तो बेसिकली दिस इज द ब्रेन. आप अगर आप ब्रेन को ऐसा उल्टा रख के देखेंगे तो ये पिछला हिस्सा है, ठीक है, तो ये सीधा हिस्सा है, कोई भी चीज का ये सीधा हिस्सा है. दिस इज द माउस. ओके. इफ यू आर viewing lower side of the mouse, so it will look like this. So this is the anterior posterior view of the brain. So you can see that this is the brain and you have the nerves, olfactory nerve for smell, okay, optic nerve for vision, trigeminal nerve for face, okay, and facial nerve also for face, vagus nerve for mostly digestive system, ठीक है, एक्सेसरी नर्व, ठीक है, आपको नेक मूवमेंट के लिए एबुडेंस है और ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर नर्व फॉर हियरिंग, एबुडेंस, vestibulocochlear for hearing and for equilibrium, hypoglossal, trochlear, these are for eyeball movement. तो ये सब चीजें आपको इस तरह यहाँ पे देखना है और इसको आपको ड्रॉ करना है. यू हैव टू ड्रॉ दिस different images and you have to write olfactory for hearing, optic for vision. Okay, likewise you have to write this. I will send the image, okay, in the group. Okay, you have to draw the diagram. Okay, I think you understood the topic. Oh, this is the and you have this diagram here also. Okay, everything. Okay, this is a very wonderful diagram. You can draw like this also. Okay, you can you can learn easily. Next, we have the topic called the autonomic nervous system. Means we talked about cranial nerves. So ये हमने cranial nerves के बारे में पढ़ा, जो ब्रेन से निकलने वाले रगे हैं, उनका कहाँ पे उसका लोकेशन है और उनका फंक्शन क्या है और कितने नर्व्स है. 12 नर्व्स है, हर एक रग का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, हर एक का अलग अलग लोकेशन है और पैथ है. Now we will talk about autonomic nervous system. What is meant by autonomic nervous system? If anyone have doubts regarding cranial nerves, can ask me.
और एल्स वी विल गो फॉरवर्ड। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम फिर आगे बढ़े। हेलो। कंटिन्यू सर। ओके, so I will continue. So autonomic nervous system. What is meant by autonomic nervous system and autonomic pathway, sympathetic division, and we will talk about everything parasympathetic division. So very important topic. Okay, very important topic. Autonomic nervous system. Okay. So then our uh, central nervous system will complete. Okay. Then you have next topic, that is sense. Okay. So let's talk about autonomic nervous system. Autonomic nervous system is actually the part of peripheral nervous system, in that it consists of motor portion of some cranial nerves, spinal nerves. Because its function is so specialized, however, the autonomic nervous system is usually discussed as a separate entity, as we will do here. Making up the autonomic nervous system are visceral motor neurons to smooth muscles, cardiac muscles, and glands. Here are the visceral effectors. Muscle will either contract or relax, and glands will either increase or decrease the secretions. So basically, the autonomic nervous system means without your concern, it will work regularly. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? इसमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, बगैर परमिशन के ये काम करते ही रहते हैं, इसीलिए इसको ऑटोनोमिक रहा गया। ऑटो ऑटोमेटिक, विदाउट योर कंसर्न। ठीक है। और ये नर्व्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। पेरिफेरल मतलब जो फैले हुए हैं रगे, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। 12 क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो उसी नर्व में से आपको मिलेगा एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इसका काम क्या है? वेसिरल मोटार न्यूरॉन्स। अब वेसिरल जो ऊपरी सतह में जो आपके मजल्स या फिर आपके क्या कहेंगे हम, आपके ऑर्गन्स है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, उन्हीं के लिए ये इफेक्टिव है, उन्हीं के लिए कारआमद है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे पिछला पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार उसको रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए बात। So basically, you can see here the nervous system is divided into two divisions: central nervous system and peripheral nervous system. Okay, peripheral nervous system have cranial nerves and spinal nerves. ओके, सो यहाँ पे बता, अब देखिए आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो डिवाइड है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स आएंगे, स्पाइन क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। अब सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मिलेगा। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिलेज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्स एंड मेक अस द इंडिविजुअल वॉर। ठीक है, आपको मैं थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बात। सो वी हैव nervous system. So basically nervous system is divided into two parts:
central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system have brain and spinal cord. Okay, and peripheral nervous system have cranial nerves, cranial and spinal nerves. So means the main system is brain and spinal cord, and peripheral nervous system is connected to the central nervous system. Means it is the mediator. ठीक है? It is connected to the organ and it is connected to the brain. Okay. So if want to send the information, it will take the information and give to the brain and spinal cord. Whatever information, what is the if any work you have to done, then the brain, the spinal cord give the information through this peripheral nervous system to this organ. सो ये क्या है, आपको बीच में रहकर दोनों को सपोर्ट करता है, यहाँ के इंफॉर्मेशन को यहाँ पास करता है, यहाँ के इंफॉर्मेशन को यहाँ पास करता है, और फंक्शन कराना है तो फंक्शन कराएगा, फंक्शन को रोकना है फंक्शन रोकेगा। यानी ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के जरिए से होता है। क्रेनियल नर्व्स कितने थे अभी पढ़े हमने, 12। स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, 31 पेयर्स। तो ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही का एक हिस्सा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल या उसको आपको कराने लगता है, फंक्शंस को कंट्रोल करता है या फिर फंक्शंस को होने देता है। सो बेसिकली व्हाट इज दिट फॉर, दिस फॉर autonomic means without your concern it will work। Okay, without your concern it will। Okay, so I think you understood this, that so we have to discuss about peripheral sorry autonomic nervous system. And again, if you want more detail, you have another thing here। Before starting with, we have to understood the concept। So यहाँ पे और थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, अब देखिए, अब ये तो नर्वस सिस्टम का हो गया। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स देखिए हमारे तीन तरह के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटार न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटार न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये सेंस यानी जो भी महसूस करने वाली चीजें हैं वो लेके आपको ब्रेन तक लेके जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और एफेरेंट न्यूरॉन्स। नेक्स्ट वी हैव मोटार न्यूरॉन्स। मोटार न्यूरॉन्स, that is which have the whatever sense it take away from the organ, the order from the brain will come to the motor neurons, then the order will go and work by the organ from the brain। Okay, so that is called efferent neurons, afferent sensory, efferent these motor neurons। Okay, so what will happen if the impulse is sensation is for skin, skeletal muscles and joints are called somatic। ठीक है, अगर यही न्यूरॉन्स अगर ऊपरी हिस्से से यानी आपके स्किन है, हड्डियां हैं, आपके मसल्स है, यहाँ से अगर कोई इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं तो हम कहेंगे सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स। सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर यही न्यूरॉन्स अगर डीप से लेके जा रहे हैं सेंस को, वो कहते हैं वेसिरल सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, अगर यही न्यूरॉन्स मोटार फंक्शन लेकर आ रहे हैं ऊपरी हिस्से के ऑर्गन्स को, तो कहते हैं हम सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। अगर यही डीप लेके आ रहे हैं तो वेसिरल मोटर न्यूरॉन्स। ओके, understood? Again I will explain to you। Okay, so basically we talked about central nervous system। Okay, समझ में आ गया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ अब न्यूरॉन्स की बात करते हैं। So basically neurons are basically neurons are
three types. Okay, one is motor, sensory, and inter. Okay, so I think the time is ending. You will please join. We will continue the lecture.